Good evening, everyone. Today, I will discuss with you the mains answer writing, how to attempt a question given in the mains. It has two perspectives, either in the criminal law or in the civil law. Likewise, if we talk about the criminal and the civil law, we have made two categorizations of attempting the mains questions. One is the theoretical based questions, where theory is more to be emphasized upon, and on the other side we have prepositional questions. So in the prepositional questions we have to write an issue, then we have to decide the matter by appraising the issues. So at some point of time law students find it difficult to write, either some of them are good in writing theory and some of them are good in writing prepositional questions, but you have to attain an experience and expertise on both patterns, because in the exams we may have seen in the past years the inclination is more on the prepositional questions, but sometimes the theory question also comes in. And when theory question comes in and the student gets unprepared and goes unprepared to the examination center, it becomes difficult for that particular student to write that question in a theory form. So today I'll discuss one topic of criminal law that we'll be taking from Indian Penal Code or slash Bharatiya Nyay Sahita. So I'll be discussing one basic topic today, the very basic topic where how we will attempt that question in the theory form as well as in the prepositional form. So if I'm talking about IPC here, IPC as well as BNS talks about two things. One is it states about the private defense. So today we'll be discussing the rights of private defense. Private defense, the meaning of it, and what are the rights available to a person who's exercising the private defense, and is there any right available to an aggressor in that case also. We will be discussing the concept first, and then I'll be explaining how to write a theory question as well as how to write a mains question, I mean the theoretical prepositional question. So first of all, if we start with the right of private defense, which is covered under one of the most important chapters of your IPC slash BNS, which is your general exceptions. Now, when we talk about general exceptions, it states that general exceptions are those wherein even if a crime has been committed, still the person somehow will be totally immune from the punishment. Why this has been provided as general exceptions? Because there are certain circumstances which are beyond the control of a human being, and sometimes it is the mindset of the person concerned where he loses control, he loses his temper to think what he has done. And there comes the picture of the categorization of general exceptions. Now, when we say general exceptions, one thing has to be stated in mind. General exception does not only deal with private defense, it also deals with other kinds of general exceptions, likewise unsoundness of mind, intoxication, doli and capex, and other things also. Today's topic is on private defense. Earlier, the private defense was covered from sections 96 till your 106. It is now covered in BNS from sections 34 till 44. Now, these are the sections wherein the right has been given by a statutory law, which is a substantive law, that states that if anybody is trying to hurt you, anybody is trying to destroy your personality, your image, your character, and your body, it is providing any kind of a harm to your body, mind, and reputation, you can also use your private defense, your self defense, and utilize it by stopping the crime. So the basic right that we say right of private defense is known as a preventive और a repulsive right. ये एक रिपल्सिव और प्रिवेंटिव राइट है कि आपको प्रिवेंट करता है और आप रिपेल करते हो. रिपेल करने का मतलब होता है कि आप यहाँ पे अगर आपको कोई इंस्टिगेट कर रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश करते हो. In the Honorable Supreme Court in Catena of Judgments have emphasized upon the right of private defense, and soonly or lately they have decided few things, crystallized few things, and universally laid down the formula.
जो इंटेंट और इंस्टिंक्ट होता है ना हमारा सेल्फ प्रिजर्वेशन का, दैट इंस्टिंक्ट इज इन आवर डीएनए. Every human being has that instinct of self preservation. Suppose if somebody is trying to hit me or hit you people, your body reaction will be there, instant body reaction will come up. This instinct of self preservation is there in the right of private defense that has been mentioned in the judgment that has been passed by the Honorable Supreme Court in the year 2022, wherein they have reiterated again that instinct of self preservation is in everyone's DNA. And the right of self-defense, you should also know about the same thing. The right of self-defense varies with the facts and circumstances of the case. It also varies with the other aspects. How you have to deal with that, that needs to be checked. So it will be different in different forms. So right of private defense has been categorized again in two parts. One is if it is a harm to a body or to a property. That too, if that harm is the harm which can cause the death to you people, or it may be an harm which is less than death. So in that case, what is your right that you can exercise? First thing, if the aggressor, right, the aggressor is the person who is attacking you and you are actually using your right of self defense. तो जब अग्रेसर आपको अगर अटैक करता है और जिस मैनर में वो अटैक करता है, इफ दैट मैनर मेक्स इट इन द एप्रीहेंशन और क्रिएट्स एन एप्रीहेंशन इन योर माइंड that if I will not stop that particular person, death would be the consequence, or grievous hurt in such a manner that you will suffer pain earlier for 20 days and now it is for 15 days. That way. So if the right of private defense in such a manner goes up and down, how? If the aggressor is trying to attack you with the intention to kill you, the right of private defense is at its peak, zenith, yahan pe rahega, so that you can also cause the death of the person. But if he has no intention of causing death to you, or either causing any kind of a rape to a woman, gratifying unnatural lust, or any other things which has been mentioned in the provisions, if that is there, the height is remaining at zenith, wherein you, as while exercising your right of self-defense, can cause the death of the person. But if this is not the scenario, you cannot cause the death of the person. The right of private defense drops to an extent or to a level where you can only cause that much harm which is necessary to prevent yourself. ये एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जहाँ पे आप अपने ही आपको बचाने के लिए ये सारे सर्कमस्टांसेस देखते हो कि क्या जो चीज़ वो कर रहा है या जो एक्ट है उसका, जो इंटेंशन या कंडक्ट है उसका, उसके कारण अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी डेथ कॉज हो सकती है या कुछ अननेचुरल ऑफेंस आपके साथ किया जा सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, अगर ऐसा कुछ भी है, या विद द इंटेंशन ऑफ causing grievous hurt to you people, then you can have the right to cause the death of the person. But if these circumstances does not exist, नहीं exist करते, तो आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उतना हार्म दोगे जो कि नेसेसरी है. अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, हार्म विच इज़ नेसेसरी, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैलकुलेटिव नहीं हो सकते कि अगर उसने एक स्लैप मुझे मारी है मैं भी एक स्लैप मारूंगी. अगर उसके पास गन है, आपने उस गन को छीन लिया लड़ाई में एंड इंस्टेंट रिएक्शन में आपने गलती से उसको गन को चला दिया, यू मे नॉट गेट अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंप्लीटली का मतलब है कि आप टोटली इम्यून नहीं हो गए क्राइम से, लेकिन यू नेवर हैड द इंटेंशन टू किल दैट पर्सन, तो आप शायद कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल किए जा सकते, जब हम उसकी एक्सप्लेनेशंस सेक्शन 300 की पढ़ेंगे /101 की पढ़ेंगे. जब मैं स्लैश करके बोल रही हूँ विच मीन्स पहले वाला आईपीसी है और दूसरे वाला आपका बीएनएस है. अब प्राइवेट डिफेंस का बेस मैंने आपको हल्का सा समझाया कि एक तो प्राइवेट डिफेंस बॉडी पे लगता है या प्रॉपर्टी पे लगता है. मीन्स आप अपनी प्रॉपर्टी बचा रहे हो तो भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. अगर आप अपनी बॉडी को बचा रहे हो या किसी और पर्सन की बॉडी इन हुम यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, इन दी सर्कमस्टांसेस में किसी को भी आप बचा रहे हो, सो इन दैट केस आपका प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा. प्राइवेट डिफेंस क्या है? रिपल्सिव राइट है, रिपेल कर सकते हो आप, और ये राइट इंस्टिंक्टली आता है क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बाउंड टू प्रिजर्व एंड दैट इज अ जनरल ट्रेट. जब भी कुछ ऐसा होने वाला होगा, जनरली यू ट्राई टू सेव योर सेल्फ बाई योर एक्शंस, राइट, बाई योर डीड्स, बाई योर सेइंग, किसी भी तरीके से.
अब इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शंस हैं बच्चे, इनके अंदर प्ली जो है ना वो लेनी पड़ती है। ये जो प्ली है ये प्रोसिक्यूशन नहीं लेता, ये प्ली डिफेंस लेता है। Getting my point? Why? Because these are the general exceptions. When I say general exception, which means in a criminal law, it is the duty of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt. And on the other side, defense can only raise the plea of either the private defense or either any of the general exceptions if that is available. अगर वो available है तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो प्ली ऑफ डिफेंस रिगार्डिंग दिस प्राइवेट डिफेंस ले रहा है डिफेंस में, तो ऐसे केसेस में द डिफेंस लॉयर और द डिफेंस साइड नीड नॉट टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, रादर इट इज़ ओनली बेस्ड अपॉन द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। ये प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस होता है, ये कभी भी आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव नहीं करना, विच मीन्स आपको एक हल्का सा डाउट क्रिएट करना है इन द माइंड ऑफ द कोर्ट एंड विच विल गिव बेनिफिट टू द एक्यूज्ड। तो जो प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो गई या प्ली ऑफ एनी जनरल एक्सेप्शंस हो गई, वो सब आपको कब मिलेंगी? जब ये राइट्स आपके पास अवेलेबल होंगे और आप इस राइट को आफ्टर द प्रोसिक्यूशन केस इज पुट ऑन रेस्ट, तब आप इसको रेज करोगे। यहाँ तक समझ में आ गया है? अब मैं आगे आपको ये समझाना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ what else has to be looked in while attempting an answer. सपोज आपको एक स्टेटमेंटल क्वेश्चन आ जाता है दैट राइट a short note on private defense or why it is called a repulsive right, और एक और चीज़ आ जाती है instinct of self preservation is in the DNA of every person, comment, discuss। ऐसे क्वेश्चंस में 10 मार्क्स का सपोजिंगली इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आता है, तो इस 10 मार्क्स में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले यू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। यू आर नॉट सपोज टू राइट द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, आई एम सेइंग हियर, मीन्स एक फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके पास। वो फ्रेमवर्क क्या होगा? उसमें आप सबसे पहले याद रखोगे कि अच्छा इंट्रोडक्शन मीन्स काइंड ऑफ मीनिंग एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, व्हाई प्राइवेट डिफेंस हैज़ बीन क्रिएटेड इन द सब्सटेंटिव लॉ, क्या पर्पस है, ठीक है। ये आप इसको अलग अलग हेडिंग्स डाल के नहीं लिखोगे, एक सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में आप इसको लिखोगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ रिपल्सिव राइट, इट इज़ अ राइट विच हैज़ बीन गिवन टू एवरी इंडिविजुअल इनहेरेंटली, विच मीन्स एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर ओन राइट्स, हिज और हर ओन बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी, एंड दैट राइट इज दिस। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि ये जो राइट है ये किस पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे मैंने अभी बोला दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी अवेलेबल टू अ बॉडी एज वेल एज इट इज अवेलेबल टू प्रॉपर्टी, एंड in what circumstances we can cause the death of the person, either in case of body or property, and in what circumstances we cannot cause the death of the person, but yes still we can exercise the right of private defense। अब ये सारा जब आप लिखोगे आपके सेक्शंस में सब कुछ दिया गया है, you are just supposed to write the sections but not the bare language। बेयर लैंग्वेज के सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स को उठाना है, राइट। पूरी बेयर लैंग्वेज लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे मेंस में, आपको सिर्फ और सिर्फ की एलिमेंट्स उठाने हैं कि अच्छा एज पर सेक्शन 34, एज पर सेक्शन 35 दिस हैज़ बीन मेंशन्ड in your own language as per section 35 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, hereinafter referred to as BNS or for short BNS करके, then you'll start writing on it। Once you make the paragraphs of everything, at the end you should be either aware of the judgment जिसमें से ये line उठाई गई है, or either you can take any name of the judgment, whether it is anything। There are lot many judgments of the Honorable Supreme Court which comes on the right of private defense। When I was talking about 2022 judgment, it is the Supreme Court judgment in which ex-CT Mahadev versus Director General case is there. That is the case name, which is, you can write it also, ex-CT Mahadev versus Director General BSF। That has been there in 2022, in which the same line has been incorporated or quoted that instinct of self-preservation is in everyone's DNA। So that way you have to write and conclude it। conclude कैसे करोगे? the hence this is the instinct। अगर वहाँ पे ये नई लाइन लिखी हुई, you can add it on your own। आप चाहो तो आप खुद भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हो कि जी this has been mentioned in this particular judgment wherein it has been stated। इसी के साथ आपके ऊपर क्या आ सकता है कि whether the right of private defense if exceeded will he get total immunity।
कि अगर मैंने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया तो क्या तब भी मुझे टोटल इम्यूनिटी मिलेगी? उसके ऊपर आपके क्या क्वेश्चन आंसर होना चाहिए दैट एज पर सेक्शन 300 अर्लियर एंड 101 ऑफ BNS, एज पर द exceptions it states that if the right of private defense has been exceeded, then in that circumstances it will be a case of culpable homicide not amounting to murder, wherein he will not be totally immune, but अंडर दी सर्कमस्टांसेस वो क्या करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि क्या इसने जो एक्सेस में किया वो क्यों किया, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस किया. सो व्हाट वी हैव टू सी हियर इज दैट वेदर दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज लेजिटिमेटली एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ये आपका एक क्वेश्चन, ये आपका एक इशू बनेगा कि क्या उसने लेजिटिमेटली एक्सरसाइज किया है. Then what you have to say that it has to be seen in the facts or in the given circumstances and the facts, and that would also depend upon the nuance of each case. Nuances होते हैं ना, nuances means again the different things. We have to see from the facts and circumstances, we have to gather that information कि whether यहाँ पे इसने legitimately exercise किया है अपना right of private defense या नहीं किया. At the end you can write the conclusion that this is the right of self defense, hence it is required. इस तरीके से सेक्शन वाइज अगर एक्सप्लेन करोगे, अपना चैप्टर में बताओगे कि सेक्शंस 34 से 44 डील्स विद द प्राइवेट डिफेंस, एंड वन बाय वन यू विल एक्सप्लेन इट इन योर ओन लैंग्वेज. यू विल बी एबल टू आंसर इट, यू विल बी एबल टू राइट इट, एंड फॉर दैट यू मस्ट हैव मास्टरी ऑफ बेयर एक्ट्स. बेयर एक्ट्स की मास्टरी में आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आई रीड द बेयर एक्ट. आई हैव दिस बेयर एक्ट ऑफ BNS. आई रीड दैट बेयर एक्ट, right, and I'll convert it in my own language. Right, I'm reading section 36. Right of private defense against act of a person of unsound mind, etc. When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by the reason of the youth, the want of maturity, of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by the reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. Now, if I have to explain, I have to write section 36, which is to be read with section 97 of the Indian Penal Code. I would have written, just focus on my words, whatever I am stating. I will be picking up the key elements also, and I'll be writing it in my own language. I will write, as per section 36 of the BNS, it states that whenever an act is committed by a person who's either of unsound mind or who's under some misconception of fact, or due to the want of maturity, he is trying to kill me, or he is trying to act, an offense has been committed by any that person, then I still have a right of private defense, even though in that case that person who's acting under such misconception will not be liable for any offense. समझ में आया? In other words, भी लिख बोल देती हूँ आपको. In other words, section 36 of BNS states that when an offense is committed by a person who's of unsound mind or of want of maturity or because of misconception of fact and when an offense is committed by any such person, then in these circumstances the other person will get the right of private defense in the same manner had the aggressor been sane or otherwise. They may be totally immune, but here the opposite person will still get the right of private defense. Right? इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो तो मैंने want of maturity, reason of youth, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कुछ वर्ड्स पिक किए और वो सेम ही मैनर में होंगे. और इसको अगर मुझे एक लाइन में लिखना है तो मैं एक लाइन में कैसे लिखूंगी? एज पर सेक्शन 36 ऑफ द BNS, person committing an offense who's of unsound mind will get immunity, but the person against whom an act has been committed will still get the right of private defense. This may be written in any of the following manners. This is again how you'll have to write with regard to the other sections. So once you learn to write, how to write it, then you will be able to understand that you're not going to write the exact words of the Bear Act, because that is not going to fetch you marks. Marks will be fetched only and only when you'll be using the law language and when you'll be using some good language, in the sense when you're taking or reading the judgments. So my emphasis is always on that you should read the judgment.
Once you'll read the judgment, you'll understand that how you have to write the answer. This is how you can answer your theory based question. If that is clear, I will proceed in the next lecture with regard to the prepositional question. So prepositional question I'll be discussing. Once I'll discuss the prepositional question with you people also, then I will give you the writing pattern also on the same question, that how to write, when to write. I'll be sharing the notes with you also, that how you have to write. You'll get a model answer over it, right? So I'm ending it right now, and we'll be continuing the next video with regard to the prepositional question on private defense, and I'll be coming up with other new lectures, maybe new videos on some subjects, as well as on the latest and the landmark cases. Randomly we'll discuss that. I'll be trying in the near future about the other topics as well. Thank you.